Yes, Yashovardhan Azad, the question here is that we are not getting the answer to the question as to why this policy was rolled back. And if anything, the cabinet note talks about how things were wrong. And it's almost like an admission of things going horribly, horribly wrong. When we look at the CBI investigation and now the case being handed over to the ED as well, what is it that the investigating agency will be trying to find out? With Mr. Manish Sisodia, who has been named as accused number 1 in the CBI FIR. I've heard some brilliant arguments from both sides. Thank God the audio was bad, so I couldn't hear most part of it. As far as the liquor scam goes, we've had the same ad nauseum repeated charges from the other side and the defense coming from the armed party side. The question is that this liquor scam started off as a policy which I fully support For example, that the entire liquor sale should go to the private authorities. Government has no business with it. Whether it was reducing the age, that's a matter of policy. The areas, residential areas, as long as it stays away from temples and hospitals, etc., is absolutely fine. The question is that if the revenue was affected, if the exchequer has been hurt, and the decisions which have resulted in, for example, giving it to the blacklisted companies, unauthorized people, the manufacturers, then obviously it's a point to investigate. Now, mind you, it was a lieutenant governor, a constitutional authority, who gave the complaint, and the CBI then took it up as a complaint and took 28 days to look into the matter. And then they registered the case under Prevention of Corruption Act, That's right. 477, which is a falsification of accounts, and criminal conspiracy. So from here, one cannot say immediately whether Manish Sisodia has made money and the other people have been involved or not, nor you can say that a crime has not been committed because it's still a detailed investigation. Now, you asked me, what is CBI going to look into? The first thing is that whether there was a quid pro quo involved in the waiver of 38 crores, in that 144 crores which was given back. That is the thing which the CBI has to look into. Now, they have raided all the places. They have searched all the documents. Our party says that nothing has been found. Maybe the CBI has had some kind of incriminating evidence on the basis of which MHA has suspended the Excise Commissioner. But yet, I would still say there is a lot to be investigated, because proving Prevention of Corruption Act is very, very difficult. And mind you, Maria, my last point is that, unfortunately, the state governments do not have access to electoral bonds. So the transport excise ministries are the rules. Look at, for example, Karnataka. In Karnataka, in that PWD bribe scam, they say it's 40% is given by every contractor. Now, in every big contract, there is an allegation that there has been a quid pro quo. Can we register Prevention of Corruption Act? It's a moot point. As long as you have opaque funding for elections, this will continue. In this case, the CBI has a tough job at hand, and I hope they're successful to prove that the charges are right. Before I go back to the politicians on the panel, Naresh Goyal ji, मैं आपके पास फिर से आऊंगी. जब ये पॉलिसी हुई तो आप लोगों ने अपना कंसर्न्स बताया था और आपका ये साफ तौर पे कहना है कि एक प्राइवेट ग्रुप्स को हेल्प करने की कोशिश की गई. तो आप अगर ये भाजपा का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से. आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने प्रॉब्लम देखी इस पॉलिसी में और करेक्शन के लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया. आपको लगता है कि जो उनका पॉलिसी का इंटेंट में प्रॉब्लम है या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है या पूरी पॉलिसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं है इसमें? मैम, एक्चुअल में ये पॉलिसी जब बनाई गई तो इसके अंदर एक है मनोज राय जी जो एक्यूज भी बनाए हैं, परनो रिका के एक्स एम्प्लॉय बता रहे हैं, बट वो देर एंड देन एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय नहीं है. तो उसके अलावा जो होलसेलर्स ने बैठ के पॉलिसी बनाई, तो ये पॉलिसी जो है मैन्युफैक्चरर कंपनीज ने अपने तरीके से बनाने के लिए उनका जो मार्केट शेयर जो डे बाई डे डाउन हो रहा था उसको अप करने के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने फेवर में बनाई थी. इसमें
पहले दिन से हमें पता था कि एक्सचेकर को नुकसान होना है। हमने सरकार को बहुत बार बताया। होलसेल एक इम्प्लीमेंट किया गया, जबकि रवि धवन जी की कमेटी के अंदर 0.5% में उसको रिकमेंडेड था कि जी ये गवर्नमेंट का होलसेल बनाया जाए, बट प्राइवेट में दिया गया और इसको कार्टेलाइजेशन करके बड़ा बड़ा बनाया गया। एक रवि धवन जी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, जो रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो दिए थे वो था जी गवर्नमेंट का इक्विटी का कंट्रोल बढ़ाना, जबकि सारे कंट्रोल जो है वो ठेकेदारों को दे दिए गए। 1+1 बेचो, जिस मर्जी भाव बेचो, जिस मर्जी भाव नहीं बेचो, ये सब चीजें जो अगर मैं देखूं तो उसके अंदर मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन को रोकना, पर इसके अंदर मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन बना के बड़े बड़े लोगों को दिए गए। और ऐसे भी आरोप है कि वही मैन्युफैक्चरर, वही रिटेलर और वही होलसेलर, इसके अंदर सेम आइडेंटिटी थी। तो ये सब चीजें जो है सरकार को हमने पहले से बड़े आराम से बताया भी था, और ऐसा नहीं है कि नहीं बताया था। पर सर ये जब अगर मैन्युफैक्चरर बैठ के पॉलिसी बनवाएगा तो शोर टाइम में अगर मैं बैठ के पॉलिसी बनाऊंगा तो मैं अपने फेवर की बनाऊंगा। तो ये इसमें मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट होना था और वही हुआ, और एक्सचेकर को नुकसान होना था तो हुआ।